हेलो, मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और आज मेरे साथ जो गेस्ट है वो बहुत ही खूबसूरत हैं। इन्हें आपने अनदेखी में देखा, इन्हें आपने बधाई दो में देखा और अभी आप इन्हें अनदेखी सीजन 2 में देख रहे हैं। अपेक्षा, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। कैसी हैं आप? Thank you so much for having me. I'm good. Undekhi has just come out, so just like 2 days ago. So just in the middle of all that buzz right now. और आपका जो किरदार है कोयल का, आपने इतने अच्छे से उसे पकड़ा और आप इतनी मतलब आप वैसे इतनी खूबसूरत है और आपने इतनी ब्यूटी सौंदर्य प्रतियोगिताएं आपने जीती हैं। उसके बाद इतना नॉन ग्लैमरस रोल करना पहला ही कितना आपके लिए मतलब चैलेंजिंग रहा ये, और क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया इसे एक बार में कि करना चाहिए आपको या नहीं, क्योंकि ये पहला रोल था आपका, पहला डेब्यू था आपका। Yeah, because it's non-glamorous, it was exciting for me because, just before that 2017, I had won Miss India, and then that year was sort of busy with different responsibilities and activities that I had to do. So when I started auditioning for roles, मुझे सारे stereotype कर रहे थे roles उस zone में, and हालांकि मुझे उस zone में कुछ problem नहीं है. I would love to do a role which is extremely glamorous and stuff. But for the first role, I wanted something that would, that is completely different from who Apeksha, so that I can sink my teeth into this new character, new role, and just focus on that. And actually, जब आप शुरू कर रहे होते हो तो ऐसे नहीं कि बहुत सारे roles आते हैं आपके पास जिसमें आप pick and choose करते हो. So in fact, I'm very grateful that अनदेखी का audition मेरे पास आया. मैंने उसके लिए, और ऐसे हमें कहा जाता है कि किसी रोल से अटैच नहीं होना चाहिए क्योंकि इतनी रिजेक्शन होती है कई बार, रोल्स दे डोंट वर्क आउट एंड स्टफ. बट व्हेन आई गॉट अनदेखी का ऑडिशन, आई वाज लाइक आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. सो 2-3 राउंड ऑफ ऑडिशंस किए, एंड आई थिंक 10-11 months के बाद इज व्हेन आई गॉट द कॉल that I've got the part. But the fact that it is non-glamorous and so different from me is what is exciting for me. राइट। अच्छा, पहला पहला काम था आपका ये एक्टिंग के तौर पर, तो इतना आपने एक्शन किया है इसमें, आप नंगे पैर दौड़ी हैं जंगलों में, और मतलब जब आप ये सब मतलब आप कर रही थी तो क्यों आपको आपको पहले से नहीं पता होगा कि इतना टफ जॉब होता है ये, तो फिर वो कितना मुश्किल रहा आपके लिए, और फिर कैसे, और इवन बंगाली एक्सेंट आपने इतना अच्छा पकड़ा है, तो उस सब चीजों के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी होगी आपको, तो उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। I think the good thing about Koil is it's so different कि मुझे उसके प्रिपेयर करने के लिए कई सारी चीजों पर काम करना पड़ा, which is I think to me the fun of being an actor, to be able to do all that. So for the accent, I worked with a Bengali accent coach for both season 1, season 2. On set में देवू सर से पूछ लेती थी कि किसी चीज को बंगाली में अगर क्या है उसका एक्सेंट, तो सर को पूछ लेती सेट पे. And in terms of action, there's a lot of action, but we've kept it very, very raw to make sure it's realistic and it's like कोयल, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन हो जाती है किसी एक्शन को रॉ तरीके से करने में और बहुत फिनेस से करने में, एंड फिनेस इज कम्प्लीटली नॉट अ पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर एट ऑल. तो हाँ, चैलेंजिंग था. सीजन 1 तो इट वाज extremely cold. Season 2 was like still fine. I had more action in season 2, but season 1 was extremely cold. I had a lot of sequences bare feet. But yeah, that challenging thing is the fun of it, na, because अगर that experience मुझे कब करने को मिलेगा. And I've always thought this, like I've always found action very, very fascinating. और मुझे पहले ही किरदार में एक्शन करने को मिल गया, so I'm just grateful. And in fact कोयल की ज्यादा लाइंस भी नहीं है. I think season 2 में तो और भी कम लाइंस है, but to convey in that silence, to that for me is the exciting part of it. वो तो अपनी आंखों से भी बोलती है, और जो उसका एक्शन होता है उसे देख के हम इतना कुछ फील कर पाते हैं कि शब्दों की जरूरत ही नहीं है। तो अच्छा, आप नेशनल लेवल की चेस प्लेयर भी रही हैं, फिर इसमें ब्यूटी में आना और उसके बाद फिर एक्टिंग में आना, ये सब कब आपने डिसाइड किया, या फिर आप हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? एक तो मैं उन्हें ब्यूटी पैजेंट्स नहीं कहती हूँ, मैं उन्हें पैजेंट्स कहती हूँ, बिकॉज देयर इज अ लॉट मोर टू मिस इंडिया एंड डिफरेंट पैजेंट्स देन व्हाट पीपल परसीव इट एज. So chess is something I've played through school, through college, university, state, national, I love chess, but
that's something I've done in college. Even now, I keep looking for people to play chess with, लेकिन कोई मिलता नहीं है क्योंकि 3-3 घंटे के गेम्स होते हैं, तो सिर्फ पापा मिलते हैं. जो पापा मिलते हैं तो उनको पकड़ के बैठ जाती हूँ खेलने. But I'm always on the lookout for people to play chess with. But and then after that, I also studied economics and was a part of a startup for a couple of years before I went for Miss India. But you know, the thing is, मेरा बचपन से ये था कि मुझे मिस इंडिया में जाना है. Acting was something I was very curious about, but I hadn't explored it up until 2016-17 when I started. I was like, yeah, just because I've done Miss India, I don't want to get drawn into the whole glamour of it, because these two are like completely different worlds. लोगों को लगता है कि एक चीज कर ली तो दूसरी चीज में घुस जाओगे, but like acting and pageantry cannot be more different from each other. So I did 2 workshops, which I really enjoyed. Then I went to an acting school, and when I went to the acting school, and I was 100% sure that this is something I love, enjoy, and want to do for the rest of my life, is when I decided to become an actor. And then I did a couple of theatre productions, and then for my first role it was Undekhi. अच्छा, बधाई दो कैसे आपकी लाइफ मतलब आपके करियर में जुड़ी? छोटा सा रोल आपका, प्यारा सा है. मैंने अभी हाल ही में मूवी देखी, प्यारा सा रोल आपका. हाँ हाँ, मैंने देखी बधाई दो. कैसी मतलब कैसे मिला आपको वो रोल, उसके बारे में कुछ बताइए. ऑडिशन मतलब कुछ भी आज, unless you're like एकदम within the industry or you've had lots of years of experience, तो audition का ही process होता है. तो बधाई दो भी मेरे पास वो ऑडिशन तब आया था जब मैंने अनदेखी सीजन 1 कर लिया था एज वन ऑफ द लीड्स ऑफ एन ensemble कास्ट. फिर अनदेखी सीजन 2 भी साइन कर लिया था. अगेन लाइक आई एम देयर इन द होल शो. That's when Badhaai Do, and I came to know that it's just like I'm on screen for 1.5-2 minutes. But I don't care, yeah, because I honestly believe it's what you do in the time you've been given than be a part of something जहाँ मैं लीड हूँ लेकिन मुझे प्रोजेक्ट ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है या स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं है. Of course I want to do that lead. Of course I want to be leads of shows, but like if I'm going to get to be a part of a film like Badhaai Do, which is so revolutionary in the LGBTQI space, which is with actors like Bhumi, Pednekar, who I have so much respect for, directed by Harshvardhan Kulkarni. Like it is a no-brainer for me to be a part of something like this. And ये मैटर करता है कि वो स्टोरी, आपका कैरेक्टर उस स्टोरी को आगे कैसे बढ़ा रही है या कैरेक्टर को कैसे अफेक्ट कर रही है. And for Komal's part, in that span of 1.5 minutes, they've shown college ka part also, where she's young, in love, she's naive, she's excited, and jump to she's married into a traditional family. She probably could not fight society. But she still has that longing for Bhumi's character, Swami. So इतने short time में अगर मैं इतना सब कर पा रही हूँ इतनी अच्छी फिल्म में, तो of course I have to do it. So then yeah, audition, and then I got the part. अच्छा, आप और कौन सी आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि क्या नए अवतार में आपको देखने वाले हैं? मैं बड़ा बोरिंग सा आंसर देने वाली हूँ. मैं बोलने वाली हूँ कि ये जब मैं अनाउंस कर पाऊंगी तब मैं करूंगी, because before that you can't announce things, but there are interesting things in the pipeline. And in terms of the character, right now I'm looking to do anything and everything. I am very greedy as an actor. I'm, if the story is interesting and if the character is something that speaks to me, then I want to do it. Like up until now, I've done Undekhi, where I play a tribal girl, Badhaai Do, where I'm playing a homosexual girl who is sort of struggling with it. And I've also been a part of Dil Bekrar, which is a show on Hotstar, in which I play a journalist. So it's been interesting so far, and I want to just keep on exploring different characters right now. कोई ड्रीम रोल है आपका कि जिसे आपने देखा और आपको लगता हो कि इस तरह का कुछ आपको रोल करना है, कोई एक्ट्रेस का या फिर कोई फिल्म का? Yeah, I'm really interested in action. I love action, and I love a woman-centric story around it. So I think something like Kill Bill is one of my favorite films, and it's one of my favorite roles. On the other hand, also love Piku. I think it's a beautiful character.
लिस्ट बहुत लंबी है यार of characters that I want to play, but yeah, these are two that I can think of right now. ओके, थैंक यू अपेक्षा हमसे बात करने के लिए। और अनदेखी 2 में बहुत अच्छा आपका काम है, और ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स में आप हमें ऐसे ही अलग अलग अवतार में नजर आए। थैंक यू। Thank you so much.